अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अनदर वीकली रीकैप। हमारे साथ अशर मौजूद हैं और आज हम दोबारा से स्टॉक्स के ऊपर ही बात करेंगे। फ़ॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मार्केट की जो सूरत हाल है अशर भाई, मेरी तो ये राय है स्टॉक्स छोड़ देते हैं, अब किसी और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो मार्केट की सूरत हाल चल रही है। क्या कहते हैं आप? कोई और धंधा पकड़ लें मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब अब ये तो चल नहीं रहा और इसके ऊपर तब हम तबसरा करेंगे तो वो मतलब मार्केट जिसको नहीं भी पता मार्केट का वो भी ये कह सकता है मार्केट नीचे जाएगी। वो भी एक्सपर्ट बन सकता है अब तो, यानी मार्केट को ये जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स बन चुकी है। हर कोई तबसरा कर रहा है, किसी को पता नहीं हो क्या रहा है। नहीं, अब प्रेडिक्ट करना इतना आसान हो गया है, यानी उसकी जो पैटर्न्स हैं नीचे शायद जा वो। रही है, हाँ, बस नीचे जा रहे हैं बस। हाँ, वो नीचे यही जा रहा है तो पैटर्न। जो भी कहेगा ये नीचे जाना है तो वो सही ही होगा हाँ, अल्टीमेटली। जब तक वो जिस तरह लोग जब ऊपर जा रहा था सब कह रहे थे ऊपर जा रहा, फिर जब वो नीचे आया, जब तक कि वो नीचे नहीं आया सब सही थे। हाँ। तो it's sort of the rising tide makes fools look like winners basically। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही। उसी तरह अभी जो नीचे जा रही है तो उसमें क्या कहते हैं, सब वो लोग बेवकूफ लग रहे हैं जो क्या कहते हैं, ऊपर जाने का दावा कर रहे थे। अच्छा, अनलेस मेरे ख्याल में अनटिल। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिन्होंने रिसेंटली पिछले एक डेढ़ साल के अंदर जो है ना वो इस सीन के अंदर एंटर हुए हैं, या ना जो उससे पहले के थे जिनको पता है कि किस तरह से मार्केट चलती है, जो सारे प्रोसेस को समझते हैं, वो शायद अभी भी रिलैक्स कर रहे हैं। उनको अभी भी लगता है कि मार्केट जो है ना एक रूटीन उसमें चल रही है और कुछ टाइम के बाद ये दोबारा से वापस अपने उस पे आ जाएगी। आई क्या मीन ख्याल है? इस पे कोई क्या कहते हैं, दो राय तो नहीं है कि मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। एंड ओवरऑल जो मार्केट हुँ, के फंडामेंटल, अल्टीमेटली ओवरऑल मार्केट तो एक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। एंड दैट इकोनॉमी ऑब्वियसली has its sort of you know ups and downs। हुँ, अब जाहिर सी बात है, जब एक इकोनॉमी अंडर परफॉर्म कर रही होगी या इकोनॉमिक सेंटिमेंट जो है बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी आर रिसीविंग इज गोइंग टू बी लुकिंग शेकी, तो ऑब्वियसली मार्केट भी इसको बल्कि पहले से ही फोर्सी करते हुए सेल ऑफ शुरू हो जाएगा। But a lot of times मैं कोई statistic पढ़ रहा था कि I हुँ, think market sell-off starts to bottom out and any sell-off much earlier, like almost 6 to 8 months earlier before the recession actually hits. And by the time it actually हाँ, hits, market has already bottomed out in some sense. So market is sort of reacting to something, much earlier. So in some ways, जो um, जो relatively more disastrous market है compared to the economy, जो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही है अभी फिलहाल तो, I guess that could be a हुँ, telltale sign in terms of what's to come in the coming weeks, months, potentially the next year or so। मुझे किसी ने, बल्कि मैं किसी से बात कर रहा था एक ट्रेडर से, and he was telling me that look, we're all setting ourselves up for a great bull run, 3 years from now। I think that's such a great अच्छा, idea. That's such a great way of looking at things. That ultimately we're all trying to set ourselves up for something much bigger and much longer moving forward। I think dot-com bubble में भी यही हुआ, '08 के crisis में भी यही हुआ कि people who were on the wrong side of the trade lost their shirt, but at the end of the day जो लोग fundamentally positioned थे, तो वो स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे जाकर अल्टीमेटली लेट्स से वो 30-40% भी नीचे जाकर अल्टीमेटली उसने 3 4 5 10 टाइम छक्के मार दिए, राइट। So I mean, a stock like Apple, हुँ, right, compared to where it was pre-COVID, pre-08, अगर 08 के पीक पे भी कोई इन्वेस्ट करता उसमें, तो given the fact there was a fundamentally strong company and the people who did believe in it, obviously it bounced back and it roared back for a great bull run। So market time तो कोई नहीं कर हुँ, सकता, but what we can always do is pick the right companies that are going to do well for the next 5, 10, 15 years,
या एटलीस्ट उनकी थीसिस सही हो। ज़्यादातर लोगों ने अभी भी जो पैसा गवाया है वो वही है जो कि ऊपर जाते वक्त भी पागलों की तरह, उनको पता भी नहीं हो रहा, चल समझ में आ रहा था कि क्यों कमा रहे हैं वो इतना। जब आपको ये नहीं समझ में आ हम्म। रहा कि आप ऊपर की तरफ क्यों कमा रहे हैं, तो फिर आप ये भी ना रोएं कि नीचे की तरफ मैंने क्यों इतना खोया, राइट? क्यों खोया, हाँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। मैं ये अशर भाई आपके साथ ये अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखा आपने शायद देखा होगा कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो जब मार्केट बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, जब सब कुछ हरा हरा होता है, तो फिर लोग जो है ना वो जो रिटेल ट्रेडर्स की मेजोरिटी हम कह सकते हैं कि वो ऐसी होती है, कहती है कि भाई मार्केट अब दोबारा ज़रा नीचे आ जाए तो फिर हम खरीदते हैं। लेकिन उसी के बरक्स जब मार्केट नीचे आ रही होती है, लालो लाल होती है, तो फिर सारे ट्रेडर्स कह रहे होते हैं जी ये ज़रा ऊपर की तरफ जाना शुरू करे ना तो फिर हम खरीदते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसको कभी एक साइकोलॉजिकल चीज़ है ये। जब तक आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि भाई क्या चीज़ है जो मार्केट को अफेक्ट करी है। जिस तरह हम इन वीकली रिकैप्स में उन्हीं सारी चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इसको समझना कि क्या वजह है कि मार्केट इस तरह से बिहेव कर रही है। तो फिर आप ये नहीं देखते कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं अभी नहीं खरीदता, और मार्केट नीचे आ रही है तो मैं इसके नीचे आने का और सही से वेट करता हूँ फिर जाके खरीदूंगा। I think bottom तो line ये is the right time to invest is always now. And ultimately you're buying a you're becoming a partner with someone in a company, and you know हर partnership succeed नहीं करती life में। No, you don't expect yourself to hold the same job forever. You don't expect हम्म। yourself to be in the same partnership forever. So we're actually reviewing the week ending 23rd of September 2022. Essentially, before I start off, this is our standard disclaimer. Please take a moment to actually go through this disclaimer. Um, by viewing this video, you are agreeing to waive all liability of losses you may suffer. If you do not agree to any portion of the recording, you may discontinue now. इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं. We'll look at a couple of things, but first things first. This was a major week for the market. Dow Jones, S&P, Nasdaq falling 4% and north of 4%. I think Nasdaq fell more than 5%. Um, I think tech-heavy Nasdaq fell more than 5% through the week. और आपको याद होगा कि last week we discussed about the CPI print that came in at 8.3% year over year in August versus the 8.1% consensus forecast. हम्म। Or core CPI था, which excludes the food and energy prices, वो भी it came at 6.3% versus 5.9% in July. तो obviously इससे पहले अंदाजा हो गया था कि फेड क्या करने वाली है, and that's exactly what happened last Wednesday when the US Federal Reserve hiked interest rates by another 75 basis points to target federal funds rate at 3.25%. उसके साथ साथ हमने अपनी फोरकास्ट भी रिवाइज की हैं, इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, जीडीपी ग्रोथ की, एंड ऑल ऑफ देम हैव टेकन अ टर्न फॉर द वर्स्ट. जो उनकी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब. जो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्टेशन थी उससे स्लाइटली ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जीडीपी ग्रोथ या जीडीपी को डिसेलरेट होते हुए देख रहे हैं. Federal U.S. Fed Chair Jerome Powell was cited stating that we have to got to get inflation behind us. I wish there were a painless way to do that. So, but clear that I think Biden is sorry the U.S. Fed Chair Jerome Powell is very clear about his intentions for what we would call a hard landing in our lingo, financial lingo. I think it's out of the question कि अब कोई soft landing होने वाली जहाँ पे market relax karegi into some sort of slowdown and then pick it up back. I think uh, jahan pe, from our vantage point and from their vantage point, from investors vantage point, I think the key to understand here is कि जो 75 basis points की hike है
जो कि अब नॉर्म बन चुका है। मतलब एक ज़माना ये था जब जब अगर ऊपर या नीचे जाता था तो it would have been by 25 basis points. But now you're looking at um, quite rapid increases, quite regular increases. पहले हर 3-3 महीने बाद होता था, and now you're looking at very quick increases of 75 basis points. And just try to imagine ke 3.25 is the base percentage for what Fed is going to be doing their conducting their reverse repos, and or the banks are going to be conducting their reverse repos with the US Fed. And ऊपर जब वो lending करेंगे तो 5, 7, 10 percentage points पर lend करेंगे. So you can imagine कि interest rates globally या जो banks charge करेंगे at least on the loans for US, mortgages, you name it, are all going to go up. So this is going to have a definitive impact, definitely a negative impact on corporate lending. Ultimately, पहले ही मैंने बात की थी कि everything is this slowdown is going to come with first and foremost जो corporates होंगे वो अपने growth plans को stall करेंगे, बोलेंगे भाई इस वक्त कर्जा लेना ज़्यादा expensive है, we should be careful about expanding at this very point in time. Recessionary fears, obviously this is also a lot of this is to do with inference कि जब आपको इस तरह की statement देते हैं, I wish there were a painless way to do that, तो आप बहुत कुछ indicate कर रहे होते हैं उसकी वजह से, right? And that has an impact on the psyche of the investors जो कि invest कर रहे होंगे to build another factory या uh, expand on their staffing requirements, human capital requirements. So ये सारी चीजें they're sentimental as well as actual reality based or based in economic reality के based interest rates are going to go up. उसके साथ साथ इस हफ्ते something that sort of comes and relates back to the U.S. The U.S. Fed hiking the interest rates is oil. Biden administration has authorized the release of 180 million barrels or 1 million barrels per day over a 6-month period, जो पिछले 6 महीने में इन्होंने रिलीज किया अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से. और इस पे पहले भी मैं एक प्राइमर कर चुका हूँ, and we'll probably be talking about it today in a separate video that I think we'll upload as a separate primer on oil. And essentially, this was done so that जो इन्फ्लेशन है उसको कटेल किया जाए, जो कि अल्टीमेटली अगर ऑयल को वो अपने पास से बेचेंगे और मार्केट से नहीं खरीदेंगे, ग्लोबल मार्केट से, तो उनके पास जो ऑयल है वो तो यानी वो जब मार्केट में फ्लड करेंगे तो प्राइसेस नीचे आएंगी, राइट? वर्सेस अगर ग्लोबल ऑयल की मंडी में या ऑयल मार्केट्स में जाकर वो ऑयल खरीदें, व्हिच इज एक्सपेंसिव. तो अब basically the other news was that now another 10 million barrels of strategic stocks will be put on the market for delivery in November. So this essentially brings the whole strategic petroleum reserves down to basically 1984 low. So back in 1984, जो strategic petroleum reserve का petroleum stocks थे, crude oil stocks levels थे, we're reaching back to that level. And उसकी वजह से हुआ ये कि जब से इन्होंने फ्लड किया मार्केट को, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि US gasoline prices according to one survey were averaging about $3.67 per gallon on Tuesday, down from last Tuesday, down from a record of over $5 seen back in June. तो you can imagine कि कितना बड़ा massive difference आया है just petrol prices पर. और petrol prices is a huge component of anyone's daily basket expenses, जो कि transport आपको हर रोज करनी होती है, right? आपकी इलेक्ट्रिक बिजली, पानी, बिजली, पेट्रोल और basically खाना पीना is one of the biggest expenses out there. जी, लेकिन अशर भाई ये जो पेट्रोल इतना तेल अमेरिका ने छुपाया हुआ है, वो इसको कब तक जो है, मतलब ज़ाहिर है ये तो एक तरह का पैच वर्क है ना, कब तक वो अपना तेल इस्तेमाल करता रहेगा? कोई तो उसने एक कोई लिमिट सेट की होगी कि हाँ, इस लिमिट तक हम जाएँगे, इतने रिज़र्व्स हमारे जब तक इस लेवल पे आ जाएँगे हमारे रिज़र्व, तो फिर हम अपना ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम खरीदेंगे। कोई इसकी लिमिट है या ये बस जब तक ये तेल महँगा है ये अपना यूज़ करते रहेंगे?
I mean, कोई limit तो नहीं है. I mean, this is up to the president of the United States to actually make the call. इसमें कोई there's nothing of that sort. इसलिए मैं समझता हूँ कि it's going to be very difficult to really going to be difficult as ये जो कर रहे हैं बेसिकली ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं. एक बड़ी रीजन ये है कि जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन को टेम करना है, बट उससे भी बड़ी रीजन ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाहिर सी बात है जो डेमोक्रेट्स हैं दे वांट टू look good as the midterms come in. Midterms I think नवंबर में आने वाले हैं, midterm elections. 2 साल आज से 2 साल के बाद एक्चुअल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं और बीच में भी मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं which I think Biden administration और Democrats are thinking कि भाई अगर ये कंट्रोल नहीं किया हमने सिचुएशन नैरेटिव को बयानिए को कंट्रोल नहीं किया तो we'll end up losing seats to the Republicans. और फिर अगर ये आ गई बात कि भाई डेमोक्रेट्स ने जो मिड ईयर इलेक्शंस हैं उसमें रिपब्लिकन्स को सीट लूज की हैं तो then obviously that creates a very positive wave Yeah, then against Democrats and in favor of Republicans. तो ये सारी चीजें politically भी connected हैं and there's no obviously there's no इस ये बिल्कुल इसी तरह है कि यानी माली खजाना जब तक के निकाल सकते उसको ड्रेन कर सकते कर रहे हैं. Now obviously there will be a point in time which is what my theory is कि they will have to buy back oil, which is क्या कहते हैं I think going to be very positive for the oil markets, and oil is here to stay at the levels that we're seeing it at. What that implies for the global markets in terms of inflationary pressure is that inflationary pressure rahega, right? And it's here to stay. Inflation is here to stay. And I think that's something very, very important that you need to pick out from this discussion is that oil markets or inflation go hand in hand. We've talked about this before as well. And agar तेल की कीमतें ऊपर रहीं because of the fact that ultimately Biden will have to either produce more, right? I mean, U.S. will have to either produce more oil, drill for more oil, or they will have to buy from the global markets. Either ways, जो OECD inventories, and I talked about this in our previous primer, and that is that OECD inventories जो हैं, oil inventories जो हैं, वो नीचे आएंगी और आती चली जाएंगी अगर US की और global. Ultimately, that means that you're just delaying something that is inevitable, and that is higher oil prices and therefore inflation. तो it's inevitable कि ये कहानी रुकने नहीं वाली, and therefore because of inflation US Federal Reserve will continue to hike interest rates, and as a result of that things will slow down even more from where we are standing today. So I think market उसको उस सब इन सब चीजों को connect कर जैसे कहते हैं ना कि एक एक खौफ की फिजा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, बयानियां क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, मार्केट आपको बता रही है कुछ, राइट? एंड दैट इज के inflation is here to stay, and the slowdown has only just gotten started. सही. So इसमें let's just look at quickly the US weekly petroleum reserves. मैंने बताया कि this is 1984 and this is where they're going back again. ये जो मैंने बात की. Also just remember for everyone that core PCE और headline PCE में जो फर्क मैंने उसके बारे में बात की थी उसका प्राइमर देख लें. But essentially जो टारगेट होता है US Federal Reserve का वो 2% है, और जो पीसीई का करंट लेवल है लास्ट जुलाई की रीडिंग है वो 4.56 है. अभी जो पिछले हफ्ते अगस्त का डेटा आया है वो सीपीआई का डेटा आया है, और अब अगले आई थिंक कमिंग वीक्स में पीसीई का डेटा आएगा व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बट सीपीआई एक तरह से इट प्रीसीड्स दिस पीसीई डेटा, इसलिए सीपीआई इज टेकन अ गुड इंडिकेटर as a good indicator of what's to come in the PCE data. तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि लास्ट जो रीडिंग थी वो 4.56 थी. US Federal Reserve targets a range of 2%, which means there's a long way to go. This is data dating back all the way from 1960s to 2022. And as you can see, it's the अगर आप एवरेज भी ले लें तो बहरहाल 70s or 80s को छोड़कर basically this is the highest reading in the past 30-40 years that we've seen. And what that means for the market is
is pretty much easy to now deduce जो आप market में देख ही रहे हैं. So, moving on to SPY review, weekly review of the SPY. Overall, जैसे कि पहले भी मैंने I've discussed this before as well. I always like to start out with the bigger picture. This is what we're looking at on the monthly for since 1998. Channel check is still in place. आप देख सकते हैं it's still respecting the channel. So far, that's what we're seeing on the monthly. Um, अगर आप 5-year trend पे आ जाते हैं, now we're looking at for the past 5 years I'm looking at the weekly chart now. Weekly chart में थोड़ा zoom up अगर आप करें तो channels check still in place. However कुछ levels मैंने identify किए हुए थे, which was the 406 405. मैंने कहा था कि ये year end का मुझे target नजर आ रहा है. Now obviously this could mean two things. Either के यहाँ पे what you're looking at situation is के यहाँ पे वापस pull होगा towards the upside at the end of the year, and this may be a good buying opportunity. या this goes through the midpoint of the channel check. कि आप देख सकते हैं channel check जो है उसका midpoint यहाँ पे क्या कहते हैं breach मतलब टेस्ट होता रहा in the past as well. तो यहाँ पे अब फिर से टेस्ट हो रहा है. यहाँ पे पहले जून में टेस्ट हुआ ये मिड पॉइंट, और अब ये ऑलमोस्ट ब्रीच कर चुका है वीकली पर तो on the as of last week. So what I feel right now is that the story could move down towards the 350-ish area, which is my next level जो मैंने identify किया हुआ है, or it moves back to, as I said, it kind of swings back to the 405, 406 level जो मैंने year end के लिए identify किया हुआ है. Either ways, anything could happen from here. Something that was very interesting on the monthly as well is that something that I wanted to discuss is that इस वक्त जो RSI है which I'm tracking, last RSI जो reading थी March 2020 में वो 41.88 थी, and right now the current RSI reading is around 44.5 44.5 पे खड़ी हुई है तकरीबन. This is where we're looking at. So what I feel is that if this gets, maybe this gets tested, and as a result we see some more pullback, but unless until ये इसको भी breach कर जाती है, which is the oversold level that we saw back in 2020. Obviously, we're now next thing we know, we're looking at the '08 crash, which saw it really moving down on the monthly towards the oversold range. So from '08, RSI has typically been above towards the overbought and somewhere in the midpoint. So typically RSI is not, मैंने पिछली मरतबा भी बात की थी कि we'll have a primer on this couple of weeks or a few weeks from now, is that RSI is not strictly oversold and overbought के 30 से below oversold and 70 से above overbought है. You have to look at the overall trend of RSI, and यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि RSI has typically been, for the SPY, been respecting the midpoint, and typically has only broken midpoint very few times. So last time it broke midpoint 11, then it tried to break tests around 16, then it tried to break around 18, अब ये 20 में break कर रहा है. And हर बार जब भी इसने break किया है, यानी कहने का मकसद, as long as it didn't obviously break through, as long as इसने test किया and tested around that level, market में वापस bounce back आया है, ठीक है ना. तो market recover किया from there on. Maybe it's not a sharp recovery, but definitely it has held that base and then it's recovered from there. तो इसी basis पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 405 could be the ending point, or maybe somewhere above the current levels, which could be an indication that it's a good buying opportunity for generally for the market. I mean, weekly RSI में मैंने फिर भी बात की कि last oversold position was around the 2000 May levels, and then June it kind of again oversold. मैं again वही वाली बात है कि you have to take everything with a pinch of salt. अगर मैं monthly पे RSI को देख रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं कम levels पे shorter time frames में भी RSI को उतना weightage दे रहा हूँ,
राइट, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में मैं शायद किसी और चीज को वेटेज दे रहा हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So it's not exactly a very clear science, because by this range, I mean, we could be testing the bottom of the RSI again. The only time when it's broken, the last time it broke, even I believe, yeah, the last time it broke was actually, आप ये देख सकते हैं, was actually in 2020 COVID, when it actually broke the went into an oversold position on the weekly. तो कहने का मकसद ये है कि दोनों चार्ट्स एक तरह से यही बता रहे हैं कि अगर तो ये यहाँ पे ऑन द वीकली अगर ये 30 को ब्रीच करता है, और वहां पे अगर एज आई सेड ये किसे जिसे कहते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट जो ब्रीच कर चुका है, एंड इट एक्चुअली मूव्स डाउन टुवर्ड्स दी 30, तो दोनों केसेस में we're looking at a very ugly position that we've actually visited past in 2020. And as we move along, we'll see आप more and उसको more. अगली उसको सर आप अगली क्यों कहेंगे? मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि उस पे उसको टच करके मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक किया है, तो क्या हम दोबारा से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? श्योर, ऑफ कोर्स, मार्केट मैंने जैसे कहा ना कि मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि मार्केट इसको टेस्ट करेगी, इस लेवल्स को टेस्ट करेगी, एंड देन इट सॉर्ट ऑफ बाउंसेस बैक. बट याद रखें कि ओवरसोल्ड पोजीशन में काफी अरसे तक मार्केट रह सकती है, और इट कंटिन्यूज टू मार्केट कंटिन्यूज टू स्लाइड, और जो RSI इंडिकेटर है दैट विल कंटिन्यू टू शो दैट इट्स इन ओवरसोल्ड पोजीशन. तो ये ये जरूरी नहीं है कि इट्स एन इंडिकेटर फ्रॉम इट्स ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है, और मोमेंटम इंडिकेटर में होता ये है कि ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि इस ये जो करंट जो सिचुएशन है उसका मोमेंटम क्या है, उसमें कितनी तेजी है, राइट. अब जब बाउंस बैक होगा तो बाउंस बैक में भी तेजी हो सकती है, राइट, जैसे कि वो 2020 में देखा. एंड देन इधर रिसेंटली आपने देखा कि ये जो लेवल्स थे, ये जब यहाँ पे इसने टेस्ट किया है RSI का बॉटम, एंड देन बाउंस बैक किया, बट देन क्विकली केम बैक, एंड देन यहाँ पे उसने फिर से टेस्ट किया है विद इन आई थिंक 2 to 3 weeks टाइम, एंड देन फिर से इट ट्राइड टू बाउंस बैक, tried to get back, but then again it's coming back to the same level. As I said, कि market could bounce off. We've seen that in the past happen. Market could bounce off, but then again it could be a short-lived moment. मेरे ख्याल से on the weekly what needs to happen is that the market needs to sustain levels above the 50 level, जिस तरह यहाँ पे उसने सस्टेन किया. as long as वो 50 से ऊपर सस्टेन करती है, मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी. But I think once it breaks down, problem है कि मार्केट sideways to downwards trend कर रही है, and that's what we've seen on the monthly as well, कि मार्केट जब तक ये 50 लेवल टेस्ट कर रही थी, इसके आसपास ट्रेड कर रही थी, यानी इससे ऊपर की ट्रेड कर रही थी, तो मार्केट ट्रेंडिंग अपवर्ड्स थी, राइट. तो ये एक अपर ट्रेंडिंग मार्केट में ये सिग्नल था कि यार RSI एज लॉन्ग एज ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, RSI क्या कहते हैं, यानी दिस कुड ऑलवेज बी अ गुड इंडिकेटर टू बाय द मार्केट. मगर ये आपको और इंडिकेटर्स के थ्रू या और स्ट्रेटजीज के थ्रू या और मतलब मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद ये आइडिया करना पड़ेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि नहीं है. अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो RSI डिफरेंट तरीके से उसको ट्रेड करेंगे आप, मगर अगर आप मार्केट रीड करेंगे, मगर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उसको आप अलग तरीके से रीड करेंगे कंप्लीटली, राइट. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि आप इस वक्त किधर हैं. ये RSI आपको नहीं बताएगा कि आप किधर हैं, क्या आप डाउन ट्रेंड में है कि आप अप ट्रेंड में. RSI सिर्फ एक स्ट्रेंथ बता रहा है कि इस मूव की स्ट्रेंथ क्या है, मगर RSI ये नहीं बता रहा कि यार ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है या डाउन ट्रेंड में जा रही है, ये नहीं बता रहा. उसके लिए हम कुछ और चीजें भी देख सकते हैं. MACD could be another function where we could look at something like to understand certain things. But overall trend हमने ही अंदाजा लगाना है, और ट्रेंड हम, जैसे मैंने कहा ना कि ट्रेंड हम बहुत सारी चीजों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं. We're obviously understanding the different support and resistance zones. We're trying to create, typically I try to create the fib levels as well. अब fib levels के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगला जो टेस्ट होगा 50 का लेवल है, और इसको I will explain some other day कि 50 का लेवल और 62% का लेवल, ये सारे लेवल्स होते क्या है. बट नीडलेस टू से कि 50 का लेवल बड़ा क्रिटिकल लेवल होता है कि इससे नीचे अगर कहानी गई तो फिर कहानी बहुत नीचे चली जाएगी, ठीक है ना. तो देयर डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी मार्केट ओवरऑल किधर खड़ी हुई है.
क्या ये मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाइज लगाए हैं, जिसकी वजह से मैं इस वक्त समझता हूँ कि 3 लोअर हाइज लगाने के बाद मैं इस नतीजे पर तो कम से कम पहुंच गया हूँ कि मार्केट जनरली तो डाउन ट्रेंड में, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी करने सिग्निफाई कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट है किधर, इज इट एन अप ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड में है तो देन यू कैन बाय दीज RSI levels around the 50 and then get into the market. This could be a great way of you timing the market in terms of entering the market. Again, if you are a short-term investor, yeah, even if you're long-term investor, you can combine this to time your trades to a certain extent. I would say to a certain extent. And then every time it comes back again you can see, but then वही वाली बात है कि relationship could break down completely, जैसे यहाँ पे break down हो गई, and it basically has been now on the lower end. अब ये नीचे वाले बैंड को के साथ ट्रेड कर रही है। अब नीचे वाले बैंड के साथ जब भी ट्रेड करती है तो we've seen के ये डाउन ट्रेंड में चली जाती है, इनमें डाउन ट्रेंड में रहती है, मतलब फिर वो ऊपर आती ही नहीं है, राइट मार्केट। तो ये डिफरेंट तरीके हैं इसको समझने के, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई भी एक इंडिकेटर आपको ये नहीं बता कर दे देगा कि यार अब मार्केट में होने क्या वाला है। ये कुछ इंडिकेटर्स आपको कुछ बताएंगे, कुछ इंडिकेटर्स आपको कुछ बताएंगे, एंड यू हैव टू यूज एरियाज ऑफ कॉन्फ्लुएंस। आई कॉल देम, well I don't technically they're called areas of confluence, जहाँ पे जो ट्रेडर्स जो भी लेवल्स इस्तेमाल कर रहे थे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि फिब लेवल यहाँ पे 50 का है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी 350 की। अब RSI लेवल सपोज करें कि यहाँ पे 350 के लेवल को ये टच करता है और RSI 30 को टच करता है। नाउ दैट इज अ वेरी की एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, राइट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो यहाँ से मार्केट होल्ड करेगी, एंड दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट इनटू द मार्केट इन द शॉर्ट रन, राइट। यहाँ पर तो यहाँ से बड़ा की लेवल है टू एक्चुअली लुक एट कि अगर यहाँ से अगर नीचे चली गई तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स विल बी सेलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो इधर दीज एरियाज ऑफ कॉन्फ्लुएंस मीनिंग जब दो तीन इंडिकेटर्स, तीन चार इंडिकेटर्स जो बड़े बड़े ट्रेडर्स, टॉप के ट्रेडर्स देख रहे होते हैं, या मेजॉरिटी ट्रेडिंग कम्युनिटी देख रही होती है, जब वो इंडिकेटर्स की कॉम्बिनेशन में एक एंट्री एग्जिट पॉइंट बनता है या एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाता है, तो ये 350 का फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन सकता है। अगर तो मार्केट भी यहाँ पे आ गई, नीचे आ गई, एंड देन ऊपर से ये RSI भी नीचे आ गया। उसी तरह एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बना था, आप ये देख सकते हैं, एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बना ये 50 का। ये जब EMA 50 को इसने ब्रीच किया, राइट, जब ये मतलब यानी इसने नीचे की तरफ ब्रीच किया, राइट, तो ये एरिया था वेयर इट वाज गोइंग टू बी एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। जब ये एरिया ब्रीच हो रहा था तो आप ये देख रहे हैं कि RSI भी ब्रीच हो रहा था यहाँ से, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट गिव्स यू एन आइडिया कि एरियाज ऑफ कॉन्फ्लुएंस हैं क्या, where are these areas where I need to look, and then based on how you can only react to the market. You cannot, the market will not react to what you're doing because you're too small. You will only react to the market as a small time trader, right? And what you will do is you will look at these areas of confluence and make a decision कि भाई यहाँ से सपोर्ट है या यहाँ से सपोर्ट नहीं है, टूट गई है सपोर्ट, and therefore I should sell. Does that make sense? बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल में ऐसे ही है। और एक और चीज़ जो मुझे वैसे तो बार बार मुझे अपने आप को रिमाइंड करवानी पड़ती है, क्योंकि एक इंडिकेटर जो है ना बहुत ही होपफुल सी चीज़ दिखा रहा होता है, लेकिन एक जो लेसन है जिसको मैंने बड़ी देर लगा के सीखा, और वो ये है कि किसी भी एक इंडिकेटर को इंडिविजुअली नहीं देखा जा सकता। बहुत सारे इंडिकेटर्स को कलेक्टिवली देखना चाहिए, और फिर ये देखना चाहिए कि मेजॉरिटी किस तरफ पॉइंट कर रही है, और वही ज़्यादातर जो है वही जो जो इंडिकेशन होती है वो ठीक होती है। तो मेरे As I ख्याल में said, RSI as I said, you can only react to things. You cannot. The market will not react to you. You need to react to things, and the way you react is either you're going to buy or you're going to sell, right? And that cannot come obviously from one. कोई एक इंडिकेटर नहीं देख रहा होता, कोई एक इकोनॉमिक फंडामेंटल साइड कर जब अपना फंडामेंटली डिसीजन नहीं बना रहा होता, तो टेक्निकली भी कोई एक इंडिकेटर देखा नहीं जा रहा होता। There is a confluence of indicators and patterns that are formed in the market which people are trying to exploit. And अगर वो patterns break कर जाते हैं, अगर वो key points break कर जाते हैं, then typically you will see a move.
Now, either that's going to be move towards the upside or move towards the downside. सिमिलरली हम्म, बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि 350 का लेवल है, की लेवल है, जहां पे फिब का जो फिब रिट्रेसमेंट टूल है उसका 350 उसका 50% लेवल टेस्ट होगा. एट द सेम टाइम आई थिंक आरएसआई विल मूव डाउन टुवर्ड्स द 30 लेवल. तो ये एक बड़ा की एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बन जाएगा, जहां पे ट्रेडर्स बीच में बेसिकली एक तरह की पोलिंग हो गई वहां से. अब वहां से जो हाँ, पोलिंग का रिजल्ट आता है बड़े ट्रेडर्स में, बेस्ड ऑन दैट पोलिंग रिजल्ट यू विल डिसाइड. आप पहले हम्म, आप नहीं डिसाइड कर सकते, बड़े हाँ, बड़े बिग बॉयज विल डिसाइड. you will सही, be you will be the tug and जैसे कहते हैं ना, tug of war is happening somewhere else. हम्म, मतलब डार्ट पूल्स हैं, there are options markets, there are 50,000 factors that are influencing this market. And आप एक डेटा पॉइंट के साथ सब कुछ अपना नहीं क्रिएट कर सकते, या रिसेशन आ रही है तो सब कुछ भेज दो, ये हो रहा है, ये इस तरह कोई भी नहीं चलता. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, राइट, मैं पोजीशन ट्रेडर हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, राइट, डे ट्रेडर हूँ. एंड देन बेस्ड ऑन दैट फिर आप वहां से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और उन एरियाज को, या वो जैसे कहते हैं ना, उन एरियाज ऑफ कॉन्फ्लुएंस को चार्ट आउट करेंगे, जो कि आपको उस टाइम फ्रेम में हेल्प करेगा टू मेक द डिसीजन. मतलब बहुत लोग, मैनी अ लॉट ऑफ पीपल ट्रेड द इन्फ्लेशन डेटा पॉइंट. जब इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हैं, दे ट्रेड दैट, दे प्रेडिक्ट बिफोर हैंड कि अच्छा पोल फोरकास्ट क्या कह रही है, देन आई ट्रेड दैट लेवल. अगर मैं सही हुआ हम्म, तो आई विल मेक सम मनी, इफ आई एम रॉन्ग आई लूज सम मनी. पेरोल, जब यूएस पेरोल, नॉन फार्म पेरोल्स आते हैं, व्हिच इज एसेंशियली द अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, राइट, जब वो नंबर्स आते हैं उसको लोग प्ले करते हैं. And I heard a lot of traders say कि यार, oh, this time ये जो payroll था, I missed that, and I thought कि expectation से ज्यादा आएंगे या कम आएंगे, and therefore I lost or made money. तो अब ये टाइम फ्रेम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स हैं जिसमें वो बात कर रहे हैं. एंड लॉन्गर टाइम फ्रेम्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेदर द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड. अगर आप लॉन्ग टर्म बिल्कुल, इन्वेस्टर हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, ये सारे इंडिकेटर्स छोड़ दें. आपको पहले समझना पड़ेगा मार्केट डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में. अब मैंने आपको बताया ना कि जनरली मैंने एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की कि भाई मार्केट अप ट्रेंड एक चैनल लेकर चल रही है, जब से अभी तक उसने डाउन ट्रेंड चैनल एक क्रिएट नहीं किया. तो लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म अगर आप हम्म, देखें, तो अभी भी मार्केट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छी है. अगर हम्म, अगर आप पिछले 10 साल का अंदाजा लगाकर अगले 10 साल के इन्वेस्ट करना चाहें, तो अभी तो फिलहाल टेक्निकली मार्केट साउंड है. मगर अब इफ एनीथिंग बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट. बट जब मैं 5 ईयर पे आता हूँ, मतलब सॉरी वीकली पे आता हूँ, तो मुझे नजर आता है कि भाई मतलब मीडियम टर्म में तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है. तो मे बी आई शुड वेट फॉर द मार्केट टू एक्चुअली test the lower end of the either the क्या कहते हैं channel, or the for example 50% fib retracement, and फिर वहां से देखूं कि मैं किधर अपने आप को बेहतर पोजीशन कर सकता हूं. अगर मैं और शॉर्ट टर्म हूंगा, तो मैं और भी मतलब मेरे फिर मैं डेली पे आ जाऊंगा. जब मैं डेली पे आऊंगा, तो मैं फिर कहानी अलग देख रहा हूँ, मैं बहुत सारी और चीजें देख रहा हूँ. मैं आरएसआई भी देख रहा हूँ जो कि बॉटम आउट कर गया, आप देख सकते हैं. मैं इधर भी देख रहा हूँ कि यार वॉल्यूम क्या आया है. मैं ऑप्शंस मार्केट भी देख रहा हूँ, मैं वॉल्यूम प्रोफाइल भी चार्ट कर रहा हूँ. मतलब शॉर्ट टर्म में और बहुत सारी चीजें फिर मैं कर रहा हूँ, राइट. तो हम्म, इसलिए बात टू सम इट ऑल अप, try to understand what your time frame is, and remember one thing: the shorter the time frame, the more homework you will have to do, because short time frames में activity कहीं ज़्यादा है, volatility कहीं ज़्यादा है. They did when copper was going up. Someone could take a long-term view of EVs, right? So मतलब there's all these things, like हर तरह का trader है. You have to decide what kind of investor you're going to be. If you haven't decided, and you leave it to the whims and desires of the market, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आप लूज करेंगे. And I'm fine, comfortable with losing money. Is just what I'm not comfortable with is the fact that नॉट रेडी, I haven't decided कि मैंने made up my mind in terms of मैंने करना क्या है. इस पोजीशन के साथ मैंने लॉन्ग टर्म I will stick to this. मतलब मैं देखता ही नहीं इसकी तरफ. इस पोजीशन के साथ मेरी एक मीडियम टर्म थीसिस है कि मैं ऑयल प्ले को किस तरह लेकर चलूंगा.
इस चीज के साथ मेरी एक बड़ी शॉर्ट टर्म थीसिस है कि फॉर एग्जांपल मे बी एप्पल फॉर एग्जांपल इज देयर इज अ रिवर्सल कमिंग इन एप्पल एंड आई फील दैट दिस इज अ ग्रेट टाइम टू गेट इनटू इट एंड इट विल रिवर्स बैक टू लेट्स से slightly better position जहां पे मेरा कुछ पैसा बन जाएगा एंड दैट्स इट मतलब that's pretty much it मतलब literally I can show this to you कि मैंने last time भी ये बात की थी and I was looking at a level of around 150 unless until the market really breaks down 150 could be a great area to come in and then trade it back at 175 150 to 175 आपका बनता है तकरीबन 16% ठीक है यार Matlab, someone could be interested in making 16, 17, 20% and getting out of that trade. That's completely fine. But there's some trades where I'm like, भाई 10x बनाना है 10x इस पे मैंने इस पे 10x से कम पे करना ही नहीं है 5x 10x इससे कम की कहानी नहीं है मैं बेचना ही नहीं है मैंने तब तक right so बिल्कुल। you have to understand this and get this through your head. आई थिंक अशर वही वाली बात है जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं कि प्रोसेस जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ज़रूरी है कि वो जो भी ट्रेडर है जो भी रिटेल ट्रेडर है वो ये आइडेंटिफाई कर ले कि वो किस टाइम फ्रेम के अंदर काम करना चाह रहा है, वो कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कितना रिस्क लेना चाह रहा है और कितना प्रॉफिट जो है वो निकालना चाह रहा है। मतलब वो एक ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दे जिसके अंदर ग्रोथ के चांसेस सिर्फ 5% हो मुश्किल से और वो एक्सपेक्ट ये कर रहा हो जी वो 50 या 20-30% जो है उससे प्रॉफिट निकाल लेगा। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली प्रोसेस की बात जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अशर हमने बहुत सारी चीज़ों को आज कवर किया है। आने वाले वीक में देखते हैं अब क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उसको फिर हम मज़ीद डिटेल के साथ कवर करेंगे। फॉर द व्यूवर्स अगर आपने हमारे दूसरे शोज़ नहीं देखे हमारे चैनल के ऊपर सारे अपलोडेड हैं। आपका फीडबैक हमें मिल रहा है और उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप वो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं और इसी वीडियो के अंदर आपके टॉप राइट के ऊपर उसका कार्ड भी आ रहा होगा, आप उसको जाकर हमारी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। प्राइमर्स हमने अपलोड किए हैं जो कि इसी तरह के टॉपिक्स आरएसआई क्या होता है, टेक्निकल फंडामेंटल चीज़ों को बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हमने उनको अशर ने उनको एक्सप्लेन किया है और मेरे लिए तो फॉर मी मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नज़र से गुजर जाती हैं लेकिन हमें लगता नहीं कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है, हालांकि उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। स्पेशली आरएसआई एक बड़ी एडिशन थी मेरी नॉलेज में। तो बहरहाल आशा थैंक यू। आई थिंक इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम। For more insights, join our limited access Discord channel now.